our government has still not taken climate change-induced migration very seriously. In fact, it's a tangent of climate impacts that tends to go unnoticed or unprioritized. There are many estimates about how many climate migrants this world will see by 2050, some going up to 1 billion climate migrants. The Intergovernmental Panel for Climate Change, जो कि एक scientific इदारा है, estimates that by 2050, about 300 million people will be displaced and will become climate migrants. Most of them will be from the developing world or the agricultural world, जिनमें से पाकिस्तान भी included है. Because most of these countries, most of the developing world doesn't have the resources. They rely on agriculture, which is heavily impacted by climate change. And unfortunately, it is the global South which is the most impacted by climate change in any case, including Pakistan, जो regularly top 10 countries impacted by climate change में शामिल होता है. We have joining us today a very learned panel. They don't need an introduction, but we have Rafay Alam Saab, who is an environmental lawyer and an environmental activist. We have Miss Afia Salam, who is a leading journalist. She raises her voice on very important issues, writes on climate change, and has done a lot of work in Sindh on climate change. We also have with us Dr. Imran Khalid Saab, who is a visiting fellow at STPI, and his research focuses on environment and climate change issues. We are also lucky to have with us the brains and brawn behind the documentary Natari itself. Mr. Jawad Sharif is an award-winning filmmaker and focuses on often ignored social subjects. Mr. Haroon Riaz, also an award-winning filmmaker, is supposed to join us at some point, but currently hasn't. I think he's having network issues because he's traveling up north. We will begin by asking Mr. Jawad Sharif to tell us a little about Natari, how they went about it, its importance, and then we'll move the discussion over to our panelists to talk about climate change, migration, and water issues within Pakistan. D. Jawad Saab. Thank you so much, Sara, for such an humble introduction. And thank you so much, everyone, for being part of this important, actually, conversation. So, Natari, basically, जो core idea जिस वक्त हमने develop किया, तो हमारा जो purpose था, वो ये था कि हम अपने around इतना सुनते हैं climate change. I mean, through the politicians and through on media or international जो न्यूज़ होती हैं या सोशल मीडिया पे जो एक कभी एक काफ़ी ज़्यादा जो है एक हाइप क्रिएट हुई है और कुछ थोड़ी सी हाइप जो है वो गवर्नमेंट ने भी क्रिएट की हुई है. सो द थिंग इज कि उस सारी हाइप के अंदर व्हेन वी लुक एट दी, आई मीन आप किसी से डिस्कस करने जाते हैं तो नो वन टेक्स इट सीरियसली. वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई नहीं है, आई मीन कि ये क्या है, ये तो ऐसे ही जिस तरह अभी तक कोविड को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्लाइमेट चेंज तो दूर की बात है. सो दिस इज द थिंग. सो तो जो इनिशियल जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो इस सोच को लेके हुआ कि उसका कुछ विजुअल एविडेंस जो है ना उसको सामने लाया जाए. आई मीन कि उसको फिल्म किया जाए और and film is the very powerful medium to bring those stories into the mainstream media, you know. So पर्पस जो है उसका ये था कि आम आदमी तक जो हमारा जो बेसिकली जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, ये पैगाम लेके जाया जाए, लेकिन इसको थोड़ी आसानी के साथ, रादर देन वो मुश्किल इंग्लिश में हम बात करें और उनको जिन लोगों ने जो है वो उसमें अपना रोल प्ले करना है उसको वो बात समझ ना आए. सो इस सारे कॉन्सेप्ट को लेके फिर हमने ये क्लाइमेट कहानी का जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव था इसको जो है वो डेवलप किया. और सारा आप इसमें साथ थे जब हमारी इनिशियल डिस्कशंस भी हो रही थी इसको लेके. और आई एम ग्लैड कि इवेंचुअली वी केम अप विद दिस फिल्म नतारी. और
I mean, अगर आप फिल्म को देखते हैं या उसमें जो फिल्म के जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं अयूब गुल सेतु, उनको जब वो देखते हैं, उनकी कहानी आप सुनते हैं, सो यू कैन एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड कि वो वो फैमिली जो है वो किस पेन से गुजर रही है और किस तरह जो क्लाइमेट है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इस पूरे इस पूरी कम्युनिटी को, इस पूरे विलेज को, और इंडस डेल्टा पे जो और विलेजेस हैं उनको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। और जब आप उस पेन को फील करते हैं, क्योंकि हमने तो लाइक व्हेन वी वर देयर इन खारोचन और आई मीन केटी बंदर से भी अच्छा खासा फासला है, और उस विलेज में जब आप जाते हैं जहाँ पे ना आपको बिजली मिलती है, ना आपको पीने का साफ पानी मिलता है, कोई भी बेसिक आपकी जो नेसेसिटीज हैं, नथिंग इज देयर। तो जब आप उस पेन को फील करते हैं कि आई मीन कि जब आपको पीने के पानी के लिए 2 घंटे का सफ़र करना है और उसके बाद आपने वो पानी खरीदना है, सो आई मीन के उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये पेन क्या है और ये किस तरह से जो हमें जो है वो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रही है, और उसके साथ जो इग्नोरेंस है, जो कि जो एक बिल्कुल ऐसे इग्नोरेंस है कि आप इतनी आसानी से बात कर देते हैं कि क्लाइमेट माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, और जो है वो डेल्टा जो है वो डूब जाएगा, कराची डूब जाएगा, ये हो जाएगा 25 तक, ये हो जाएगा, फिगर्स ये बता रही हैं, बट नो वन, आई मीन नो वन केयर्स अबाउट इट। सो द होल पर्पज इज कि किसी तरह जो है उसको जो है उस इस फिल्म को जो है वो उन कम्युनिटीज तक लेके जाया जाए, हमारे पॉलिसी मेकर्स तक लेके जाया जाए, और उनको थोड़ा सा जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक इमोशनल उसका इम्पैक्ट दिखाया जाए, एक थोड़ा सा महसूस करवाया जाए कि ये क्या हो रहा है, और अगर हमने इस स्टेज पे स्टेप नहीं लिए तो ये कितना वर्स हो सकता है। और आई मीन कि आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द टीम जो जिसमें हमारे कैमरामैन थे आसिफ अली, हारून, रियाज, ही इज द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एज वेल। मतलब जिस तरह वो दिन गुजारे हैं और जिस डिफ़िकल्टी में हमने उसको फिल्म किया है, जहाँ पे बैटरी चार्ज करना जो है वो मुश्किल होता था, और बीच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, बट आई मीन कि अगर अभी आप हम उसको स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं तो वी फील कि शायद हम उस पेन को किसी हद तक पोर्ट्रे करने में जो है वो थोड़े से सक्सेसफुल हो गए हैं। इसमें कुछ और बातें हैं, बट लेट्स मूव ऑन, मैं फिर उसमें ऐड ऑन करता रहूँगा। थैंक यू जवाद, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक्चुअल इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज के हैं वो पीपल लिविंग इन अर्बन सिटीज और हमारे पॉलिसी मेकर्स उधर तक उन तक नहीं पहुंचते, उनको ग्रास रूट लेवल का आइडिया ही नहीं है कि हो क्या रहा है असल में। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर अवेयरनेस रेज करना जरूरी है, हो रहा है, एंड कुछ गवर्नमेंट भी कर रही है, कुछ सिविल सोसाइटी कर रही है, बट जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है, एटलीस्ट दैट्स हाउ आई फील। राफी साहब, प्लीज टेल अस अबाउट क्लाइमेट चेंज, उसके पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट्स हैं। हमारे लॉट ऑफ पीपल, आपको पता है, दे हेयर अबाउट क्लाइमेट चेंज, लेकिन उन्हें कोई उसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, सो प्लीज गाइड अस अकॉर्डिंगली। Assalamu alaikum. Thank you, Sara, and thank you for inviting me to participate. Let me get my presentation sorted out here. I wanted to speak a little bit about climate change, how it's going to affect us. So let me start by saying कि जी पिछला 1.5 साल जो हमारा गुजरा है कोविड लॉकडाउन में, हमने दुनिया को तब्दील होते हुए देखा है, and it's changed in all sorts of ways. One of them is just the fact that we're sitting having this conversation on Zoom. But you know, for a second, I want you to understand that climate crisis ke jo masle hain are much more complicated than the problems we're facing with the COVID pandemic, or how much we've had to change our lifestyles for the COVID pandemic. So climate change hai kya? I mean, we're always told about, you know, climate change is going to do something or something or the other. But I wanted to run through this rather brief video of temperature anomalies, because climate change occurs when we take or burn greenhouse gases. A greenhouse gas is anything we take out of the soil and burn for our energy or our transport uses. These greenhouse gases heat up the atmosphere, and over the course since the Industrial Revolution, we've seen temperatures rise increasingly and rather rapidly and rather worryingly.
This is climate change. It's that global warming. And this global warming throws off very well-established weather patterns that in many complicated ways underpin human civilization. So that's what the climate crisis is. It's changing weather patterns that threaten human civilization at the very least. And I can give you examples of this. For instance, we measure greenhouse gas concentrations in the atmosphere by looking at the amount of carbon that's in the atmosphere. And right now in 2020 or 2021, the Mauna Loa Observatory in Hawaii has recorded that the Earth now has on average 420 parts per million of carbon in the atmosphere. Now, this logarithmic chart shows you that you have to go back nearly 20 million years to find a time on planet Earth where such a carbon concentration could be found again. And that was an extinction event. Now, just to put that into context, human civilization, like human beings, the species, Homo sapiens, haven't been on Earth for more than 1.5 million years. So this carbon concentration that we're seeing now is far beyond the scope of our human civilization to even begin to appreciate. And do remember, back then, 25 million years ago, when these carbon concentrations were in the atmosphere, ocean levels were at least 10 meters higher than they are today. This increase in carbon concentration is resulting in increasing temperatures that I've already talked about. And right now, compared to the pre-industrial level, planet Earth is about 1.1, 1.2 degrees warmer than it was. And you might ask what this means. It doesn't sound like much, but just at 1.1 and 1.2 degrees warmth, we're beginning to see images like this that we saw last year with a forest fire in California, or this image of about 1.5 years ago from the devastating forest fires in Australia that actually wound up costing close to 800 million animals that were lost, unable to escape the flames and the heat. But focusing then a little bit on Pakistan, I want to give you some examples of what we're going through today. In 2018, there was an unseasonal April shower that wiped out a substantial portion of Punjab's wheat crop. Now, I understand that in 2019, there were some political machinations with respect to wheat supplies in Pakistan, but the end result is that in 2019, Pakistan did suffer wheat shortages and we had to import this staple food crop into Pakistan. That's an impact of the climate crisis. In Karachi, a few years ago, in 2015, there was a week-long heat wave that resulted in the deaths of 1,400 people. And right now, as Pakistan is currently going through a heat wave as well, I'm reminded that this is going to be a characteristic of the climate crisis in Pakistani cities, where people who don't have access to electricity or to air conditioners will be trapped in these ovens, almost poorly insulated homes, and at extreme risk to their lives, because beyond 46, 47 degrees centigrade, the human body actually can't withstand this level of heat. We have in Lahore now a 5th season, and for a country that isn't very heavily industrialized, the fact that there's so much air pollution, and most air pollutants are greenhouse gases, should be red alarm bells, because on average, the life expectancy in Pakistani cities is down 2 years on account of air pollution, and in Lahore, because it's worse, it's about 5 years lost because of air pollution. And that's an impact of the climate crisis. Last year was actually a national emergency in Pakistan on account of a locust plague. And you may wonder why locusts are concerning over here, but locusts have as much to do with the climate crisis as the forest fires, the pictures of which I was showing you just a few slides ago. Because locusts breed in wet weather. And unseasonal wet winters for the last 4 years over the Horn of Africa have allowed locust populations to expand and grow to their plague sizes. And these pests have destroyed crops from the Horn of Africa all the way into Bihar, into India. And that's an impact of the climate crisis that we're seeing. And who can forget the rains in Karachi? 2 days of rain in Karachi knocked out the commercial capital of the country for 2 weeks. And we're still seeing the repercussions of that with various ham-fisted urban development and stream cleaning attempts in Karachi right now, which raise the issue of climate justice. So that's what's happening. I mean, we're just at 1.1, 1.2 degrees of warming. But I'll have to go back to about 25 years ago when the international community sat down and they said they were going to do something about climate change, and they signed the United Nations Framework Convention on Climate Change. The objective of which is to stabilize greenhouse gas emissions in the atmosphere so that they prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
And there have been mechanisms underneath this to sort of manifest that intention through the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, both of which seek to restrict global warming. The Kyoto Protocol seeks to restrict it to 2 degrees of warming, and the Paris Agreement is more ambitious, seeks to restrict it to about 1.5 degrees of warming. And do remember, we're at 1.1, 1.2 degrees, and the international community's pledge is to make sure it doesn't go past 1.5 degrees. I just want to stop here for a second and just talk about Paris and Pakistan. Because under the Paris Agreement, every country has to put down its highest ambition for greenhouse gas emissions reductions. And I understand Pakistan is a developing country, and so its speaking of greenhouse gases will be after 2030. But I just want to point out that when we submitted our nationally determined contribution under Paris in 2016, we actually anticipated a 400% increase in greenhouse gas emissions in Pakistan, mostly on account of the energy and agriculture sectors. Now, I know a lot of people say Pakistan isn't a big greenhouse gas emitter, and you're right, at the 2015 level at 400 million metric tons, we're probably at 130, 135 in the list of countries in absolute emissions terms. But 1600 million metric tons, which was the projection that Pakistan put forward, would have put Pakistan where Japan is right now at number 9 on the list of greenhouse gas emitting countries. It's ironic that these ambitions have not been achieved because of economic sort of stagnation in Pakistan. But I mentioned that moving forward, I just want to say that since 1992, when the international community agreed to stabilize greenhouse gas emissions, we have produced more greenhouse gases since than the human race produced historically before. And in other words, the international agreements have not worked. There has been no stabilization of greenhouse gas emissions. Hum to pollute karte ja rahe hain. Now, I want to put this into context because as temperatures rise, we're at 1.1, 1.2 degrees centigrade, and there are fires in the Arctic Circle that have never been experienced before. 800 million animals died in Australia during the course of 2 months in 2020 and 21. As temperatures increase to 2 degrees, 3 degrees, we're going to begin to see wide-scale crop failures and food shortages. And beyond that, there'll be civilizational collapse, not in the sense that human beings will become extinct, but the systems that we have evolved over the course of centuries and millennia that keep us from killing each other so that we can feed ourselves are slowly going to become undone. The difference between 1.5 and 2 degrees of warming has been likened to 150 million deaths, which will probably take place in Asia and African cities, mostly on account of air pollution from the transport and energy sectors. But 150 million people is more than 4 times the number of people killed in World War I and World War II put together. And we know that we have emitted enough greenhouse gases in the atmosphere today to lock in at least a 2-degree temperature increase by the middle of next decade. That is the scale of devastation that we're facing with the climate crisis. So what do we do when people say, what do we do about the climate crisis? Well, beyond individual actions, we have to understand that the climate crisis has come because of various historical, economic, and social systems, which we have to identify and address and undo. And in my opinion, these systems are capitalism, patriarchy, colonialism, consumerism, and the fossil fuel economy. And let me explain these before you accuse me of being a socialist, which incidentally I am. But when I say capitalism, I mean the unaccountable exploitation of resources and human labor for wealth, which has caused anomalies like this report from The Guardian in 2018 that says that just 90 companies that still exist today are responsible for 2/3 of global historical greenhouse gas emissions. Now, that level of wealth that is now held by so few people, knowing full well of the damage they're causing to the future of the human race, is the unaccountable exploitation of resources that capitalism throws up. And we need a system that does not allow this. We need a system of economics where your exploitation of labor and nature is accountable, where you have to respect both, where there is a balance in how you work. There are other things that capitalism throws up as well, which is this NEPRA chart of energy tariffs in Pakistan, which demonstrates that right now in Pakistan, renewable energy sources are cheaper than any other type of fossil fuel energy resource, including coal and including hydro. So not only are renewables environmentally friendly, but they're financially more sensible. So why on earth then is Pakistan signing long-term fossil fuel energy contracts or sticking to them? Well, that's something that capitalism brings up because it is an unaccountable exploitation of resources that we need to address.
Patriarchy is a system that is a handmaid in capitalism. It's vice versa as well, where a man is at the center of the system, creating a systemic discrimination against women. But it is a system of exploitation of resources. And you see, because women are more vulnerable to climate change, we cannot have any type of address to the climate crisis without having women part and parcel of that change. So addressing the patriarchy is crucially important, as is consumerism. Because consumerism is thrown out quite a lot, actually. People tend to accuse human populations per se. We say that there are too many people in Pakistan, that's why we have an environmental crisis. But this forgets the fact that people don't consume or pollute equally. You know, I live in what I consider an environmentally friendly household, but my pollution levels are tens of times higher than someone who lives in Bhakkar. And at the same time, my footprint is nothing compared to the billionaire class, the 1%, or according to this chart, the 10% of the richest people in the world who consume over 50% of its resources. So this consumerism has to be addressed, the consumerism of the affluent. And this is the point I want to make. When we talk about climate change, we often talk about what Pakistan can do amidst other countries. But climate change is more than just countries competing with one another. It's the affluent and their consumerism that's destroying the planet. So we have to actually look at ourselves and our behaviors as well. And just remember, if you want to wake up in the morning, you don't have to have a cup of coffee flown to you from several thousand miles. Just go to sleep 2 hours earlier. And then to end, when people ask me, what do we need to address the climate crisis? I tell them you need empathy and knowledge. You need to know what the climate crisis is, and you need empathy most importantly. Because as I said earlier, as civilizational collapse takes place, as the systems that we have grown accustomed in our life begin to evaporate, things like democracy or the election systems, not just in this country, but in so many others, are being shattered. As these systems collapse, we have to remind ourselves of the humanity in other people. And that is essentially what empathy is, and what we need to face the climate crisis. I thank you very much for this opportunity. And just in passing, I want to say that this attempt at making a film is absolutely necessary in Pakistan, because the Pakistani climate discourse starts from a place in the 1990s. आप याद करें, जब ये सारी climate और environment की बातें शुरू हुई थी, पाकिस्तान के अंदर expert नहीं होते थे, तो बाहर से लोग बुलाए जाते थे, अच्छे expert होते थे. They used to do these 2-3 month studies of Pakistan and present them to the ministry, और उसकी बुनियाद पे आगे policy बनती थी. But as a result of that type of intervention, most of the climate discourse in Pakistan, ek to is in English, and secondly comes from a top-down outsider's perspective. अब 20-25 साल बाद जब इतने लोग यहाँ से ना सिर्फ graduate हो चुके हैं with degrees in environmental sciences and in some case climate sciences, and with experience under their belt, we can now turn to them and listen to their voice, so that we get our own discourse on climate crisis that comes from the global south. And I really appreciate the effort of the team of putting this film together, and I do look forward to watching it. Aapka bahut bahut shukriya. Thank you so much, Rafay. That was extremely comprehensive. आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया what climate change is और उसके क्या impacts हैं पाकिस्तान पे. You also raised a very important point, which is climate justice. Climate migrant, so climate change या माहौलियाती तब्दीली हर एक को equally नहीं impact करेगी, हर मुल्क को भी equally नहीं impact करेगी. औरतों को आदमियों से ज़्यादा impact करता है climate change, लेकिन एक strata, एक financial strata को सबसे ज़्यादा impact करता है. और climate migrants भी, या जो लोग climate change की वजह से migrate करेंगे, अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने गांव को छोड़ेंगे, वो भी generally एक financially marginalized strata से belong करते हैं. Miss Afia से मैं अब दरख्वास्त करूंगी कि she please tell us, you have worked so much on this issue and you've done such a good research and presented it. आपने climate migration से related सिंध में क्या देखा? How does it impact people there? औरतों और आदमियों में क्या impacts का फ़र्क है? बच्चों और बूढ़ों पर भी, and please tell us how it's working on the ground. Excuse me. Thank you so much और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने इस टॉपिक को पहले चूज किया और इस पे आप लोगों ने फिल्म बनाई. जवाद मैंने देखी है, मैंने पूरी नहीं देखी लेकिन काफ़ी देखी उसमें, और ख़ास से आपने उसको जो है ना, उसकी जो एक इंटेंसिटी है इस प्रॉब्लम की, उसको आपने कैप्चर किया है, और जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे राफे ने कहा कि अपनी ज़बान में और अपने लोगों के ज़रिए इस चीज़ को कम्युनिकेट करना कहीं ज़्यादा असर अंगेज़ होता है.
दूसरी बात ये कि ये क्लाइमेट रेफ्यूजी या क्लाइमेट माइग्रेंट्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना नहीं है. क्लाइमेट चेंज ही को समझने में दुनिया ने कोई 1-2 डेकेड निकाल दिए और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रहे, और अब वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. यस, मिस्टर ट्रम्प इज नो लॉन्गर देयर, सो अब वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट तकरीबन पूरी दुनिया में है. मैंने ये टर्म पहली मर्तबा सुनी थी जब हम लोग एक फेलोशिप के उसके इवेंट के लिए गए थे हम लोग वियतनाम में, और वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और वहाँ पे एक टर्म कॉइन की गई थी जिसको कहा गया था क्लाई माइग्रेंट्स. और वो चूंकि साउथ एशिया के ममालिक और कुछ अफ्रीका के कोस्टल ममालिक अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ दे रहे थे, तो वो बता रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गई है. बांग्लादेश से इस तरह की चीज़ें काफ़ी डॉक्यूमेंटेड थी, लाओस कैम्बोडिया की प्रेजेंटेशंस थी, अफ्रीका की कुछ ममालिक की थी, और उसमें इस चीज़ की प्रेडिक्शन की गई थी कि ये जैसे जैसे प्रॉब्लम्स अभी उस वक्त तक ये सिर्फ कोस्टल एरियाज के बारे में प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी, दूसरे इलाकों के बारे में अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी. तो उसमें ये मैप आउट किया गया था कि इसमें आपने भी जैसे एक फिगर कोट किया कि कितने ज़्यादा इम्कानात हैं लोगों के डिस्प्लेसमेंट के बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स. And because we have an almost 1,000 kilometer long coast, और हमने already देख लिया है, और आपने जो आज टॉपिक चूज किया है वो भी इंडस डेल्टा को चूज किया है, तो मैं अपना थोड़ा सा उसी की तरफ इसको कंटेन करूंगी. बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड एवरीबडी that this is not the only place and this is not the only reason which will induce migrations. Desertification is another reason. जब आपके पास पानी के वसाइल कम हो जाते हैं तो तब भी लोगों को नकल मकानी करनी पड़ती है, और इसमें हमें एक इसका भी समझने की ज़रूरत है. दो जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं उसमें कुछ फ़र्क है, एक माइग्रेंट्स हैं और एक रेफ्यूजीज़ हैं. इनमें फ़र्क होता है. जो आपके वापस जा सकते हैं किसी जगह पे, वो यूजुअली वो रेफ्यूजीज होते हैं और रेफ्यूज लेते हैं किसी जगह ताकि जिस जगह से डिस्प्लेस हुए हैं, जब वहाँ हालात बेहतर हो जाएं तो वो वहाँ वापस जा सकें. माइग्रेंट्स अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगहों से आ रहे हैं कि वो उन जगहों का इकोसिस्टम जो है वो इतना तबाह हाल हो गया है कि वो दोबारा वहाँ नहीं जा सकते. जवाद ने मेंशन किया खारोशान का. खारोचान है, आपके केटी बंदर है, वहाँ के कई ऐसे गांव हैं जो कि 2-3 मर्तबा वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, वहाँ पे सी इंट्रूजन की वजह से. अच्छा, अब हमारे मुल्क में ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि सी इंट्रूजन क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, या जो हमने अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जो कि पानी को और सिल्ट को नीचे तक डेल्टा को ग्रो करने में जो मदद देते थे, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है ना. ऊपर से सिल्ट आती है दरियाओं की, और हमारा एक बहुत बड़ा दरिया का निज़ाम है, मतलब जो माइटी इंडस जिसको हम कहा करते थे हिस्टोरिकली, जो कि अब कई महीने तक तो हमें उसमें सिर्फ खाक उड़ती नजर आती है उस माइटी इंडस में. तो क्या ये वजह है जिस वजह से वो आपके सी इंट्रूजन हो रही है? और अगर ये वजह नहीं भी है तो ये चीज हमें इसकी इंडिकेशन देती है कि जब सी लेवल राइज एक सिग्निफिकेंट लेवल की होगी तो उसके भी यही असरात होंगे कि वहाँ जो आपके साहिली पट्टी पे गांव हैं वहाँ के लोगों को वहाँ से वो डिस्प्लेस हो जाएंगे. इस वक्त सी इंट्रूजन की वजह से खुद एक गांव जहां मैं खुद जा चुकी हूँ 3 मरतबा डिस्प्लेस हुए हैं वहां के लोग. आपने ये भी कहा था कि बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, औरतों के ऊपर क्या असरात होते हैं, क्योंकि हमें हर चीज के लिए खास डिफरेंट लेंस लगा के हम देखें तो आपको फिर उसमें वो फर्क नजर आना शुरू होता है. एक तो आपकी कम्युनिटी की डिस्प्लेसमेंट हो गई. अच्छा, अब जब कम्युनिटी की डिस्प्लेसमेंट हुई तो जो उनके लाइवलीहुड की ऑप्शंस थी वो वहाँ जिसके जो अपनी जनरेशन से वो करते चले आ रहे हैं, जो उनका अपना एक तौर तरीका है, जो फिशर फोक है वहाँ पे, या जो आपके कोस्टल एरिया में आपके जो एग्रीकल्चर होता था, डेल्टा के एग्रीकल्चर वो नहीं रहा, तो क्या करेंगे वहाँ के लोग? फिर कुछ और करना पड़ता है, कुछ और करने के लिए फिर कहीं और जाना पड़ता है. तो मैं आपको सिर्फ एक गांव का जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि वो 2-3 मरतबा वहाँ से डिस्प्लेस हुए वहाँ के लोग, वहाँ पे एक बड़े मियाँ थे जिनके पास हम गए थे, उनसे बात कर रहे थे, वो उस गांव के हेड थे. तो उन्होंने हमें कहा कि जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको हमारे इस गांव में या मुझ जैसे लोग नजर आएंगे, उनका मतलब था कि बुजुर्ग, या आपको यहाँ औरतें और बच्चे नजर आएंगे, क्योंकि जितने
जवान या जो एबल बॉडीड जिनको कहा जाता है मर्द, वो तमाम के तमाम वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कोई रोजगार नहीं था तो वो दूसरी जगहों पे चले गए। कोई कराची के जो आपके साहिली पट्टी में गांव है, रेडी गोट है, इब्राहिम हैदरी है, वहाँ आ गए। कोई थोड़ा सा और ऊपर वहाँ पे कोई लकड़ियाँ काटने का, कोई मजदूरी का काम करने लग गए। इस तरह की चीजें, उनकी लाइवलीहुड बिल्कुल बदल गई। और जिस जगह वो रहते थे वो वहाँ से पूरी फैमिली को लेके नहीं जा सके, तो अब वो फैमिली वहाँ पे बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जिसकी वजह से भी उनकी तमाम वो जो लाइफस्टाइल है वो बहुत महदूद हो जाता है। बच्चों के स्कूलों में लाने ले जाने का कोई इंतजाम नहीं है। अगर कोई औरतें वहाँ पे बीमार होती हैं, उनके पास हेल्थ के फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं है, उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता, या हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ तक उन तक पहुँचाने वाला कोई नहीं होता, तो पूरे का पूरा एक जो निज़ाम है वो बिगड़ जाता है। अच्छा, एक और मैं आपको उसका अब बिल्कुल एक और एक इलाका है उसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ। ठट्टा हमारा साहिली एक डिस्ट्रिक्ट है। ये ठट्टा जिला की मैं आपको ये साहिली पट्टी का मैंने आपको की मिसाल दी, और जो जवाद ने भी मिसाल दी वो भी ठट्टा ही जिला की साहिली पट्टी है। उसके अलावा सिंध में बदीन का भी एक साहिली पट्टी है, वहां से भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं, और वो इसी तरह से कि उनको इनलैंड आना पड़ा और उनको और कुछ काम करने पड़े। कोहिस्तान का इलाका, ठट्टा में भी कोहिस्तान है, ज्यादातर लोग पाकिस्तान में जो आपके नॉर्थ में कोहिस्तान है, केपी में है, उससे वाकिफ हैं, लेकिन ठट्टा में कोहिस्तान है जो कि कीर्थर की पहाड़ियों के बिल्कुल फुटहिल्स के ऊपर वो एक इलाका है, बिल्कुल एरिड एरिया है। वहाँ पे वो रेन फेड एरिया है। वहाँ पे पानी का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होता है कि जब बारिशें हों कीर्थर की पहाड़ियों में, तो वहाँ के पहाड़ी नालों से जो उस इलाके में जो नेचुरल डिप्रेशन है वहाँ जब पानी जमा होता है तो सिर्फ वो उनके पास पानी का एक जरिया है। और मीलों, आपने भी जिक्र किया, खवातीन जाती हैं, दिन में कई मरतबा जाती हैं, अपने जिस्म के ऊपर वो एक बोझ लाद के ले जाती हैं, लेकर आती हैं, जिससे उनकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होती है। वहाँ पे भी पानी की तलाश में लोगों को जाना पड़ता है दूसरी जगह, और वहाँ से कई फैमिलीज जो हैं वो फिर जो डाउन जो इलाके हैं आपके साउथ सिंध में, आपके गोड़ाबारी है, बगान का इलाका है, इस तरफ लोग नकल मकानी कर गए, क्योंकि इनके पास मवेशी होता है। इंसानों के लिए जब पानी नहीं है तो मवेशियों के लिए कहाँ होगा, तो उनका वो एक एसेट है, उस एसेट को सस्टेन करने की खातिर उनको वहां से नकल मकानी करनी पड़ती है। तो एक ये भी क्लाइमेट माइग्रेंट्स का एक वो आप एलिमेंट है जिसके ऊपर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहाँ पे मैं एक इदारे के साथ वॉलंटियर करती हूँ, वहाँ हमने वाटर एक्सेस ही का काम किया, और बिल्कुल वो हमने क्लोज टू नेचर इंटरवेंशन थी कि वही जो डिप्रेशन थी जिसमें बारिश का पानी जमा होता था उसको हमने हैवी मशीनरी लगा के बहुत बड़ा बड़ा कर दिया। तो जब बारिशें हुई तो वो जो पानी 2-3 महीने में वहां से खत्म हो जाता था, क्योंकि ये मत भूलें कि वहां पे भी टेम्परेचर्स अबव 40 ऑलमोस्ट टचिंग 50 होता है, तो वेरी रैपिड इवेपोरेशन भी होती है। तो वो पानी जब वहां पे 6-8 महीने के लिए वाफिर मिकदार में जमा हो गया, तो एक तो उन औरतों की जिंदगी कुछ आसान हुई, जो वहाँ की कम्युनिटीज, क्योंकि इनके पास छपड़े होते हैं जो आपके होते हैं ना, थैच हट्स होते हैं, वो डालते हैं अपनी किसी गधा गाड़ी पे डालते हैं, बैलगाड़ी पे डालते हैं, या अगर किसी की सुजुकी होती है उस पर डालते हैं और कहीं और निकल जाते हैं। तो वो लोग वापस आना शुरू हुए अपने माल मवेशी के साथ, और दोबारा उन्होंने अपने उन्हीं घरों में जाके उसी जमीन के ऊपर जाके अपने वो छपड़े दोबारा बना लिए। लेकिन जो उससे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि इसको हम एक रिवर्स माइग्रेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये भी एक फिनोमिनन है कि कोई अगर कम्युनिटी किसी ऐसी जगह से नकल मकानी करती है तो वो कोई फैसिलिटी या कोई आसानी उनसे छिन जाने की वजह से नकल मकानी करती है। अगर वो उनको दोबारा आप दे दें तो कोई अपनी जो आबाई जगह है उसको खुशी से नहीं छोड़ता है, उनको वहीं पे वो कंफर्ट होता है रहने में। तो ना सिर्फ ये लोग वापस वहां आए, बल्कि जब इनके इलाके की खबर उस इलाके में गई जहां ये लोग नकल मकानी करके गए थे, तो वहां से लोग अपने माल मवेशी लेके यहाँ आए। तो आपने भी इसकी तरफ अलूड किया था, राफे ने भी इसका जिक्र किया, और जवाद ने भी, कि एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप होता है जब एक इलाके के लोग दूसरे इलाके की रिसोर्सेज के ऊपर एक स्ट्रेन के तौर पे देखे जाते हैं। अच्छा, अब एक हमारे यहाँ एक अच्छी जो चीज है, ये एक हमारे लिटरली घुट्टी में पड़ी हुई है कि आप किसी को रिसोर्सेज से अब वो उनमें तब्दीली आ रही है, और वो उसमें भी ये जो राफे का कहना है ना, आई डोंट थिंक वी शुड बी अपोलोजेटिक, सोशलिस्ट एक आउटलुक है,
اس میں ریسورسز کے اوپر اب لڑائی ہونی شروع ہوئی ہے. لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں خاص طور پہ سندھ کے اس علاقے کے لوگ وہ ہمیشہ سے بہت کھلے دل کے اور بہت مہمان نواز مانے جاتے ہیں. تو جب ان کے علاقے میں لوگ نقل مکانی کر کے آتے ہیں تو چاہے وہ ان کی اپنی ریسورسز کے اوپر سٹرین ہوتا ہے, وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے. تو ان کو وہ دبے الفاظ میں ہم سے شکایت کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ لوگ آ کے ہمارے ہی پانی کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مال مویشی, کہتے ہیں یہ ہمارا پانی ان کے جانور گندا کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے جانور بھی اسی پانی میں ہوتے ہیں, تو وہ کوئی پاک پوتر جانور نہیں ہوتے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ایک ریسورس کے اوپر ایکسٹرا اسٹرین ہوتا ہے جب آپ کی اس طرح سے مائگریشن ہوتی ہے, جو ایک کمیونٹی کسی دوسری جگہ پہ جاتی ہے اور وہاں پہ ڈفرنٹ کائنڈ آف کانفلکٹس دیتے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک بالکل ان ایون ڈیولپمنٹ ماڈل ہمارے ملک میں جب سے ہمارا ملک بنا ہے وہ ان پلیس ہے. یہ اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک روزگار کی تلاش میں, اسپیشلی کیش جو روزگار دیتا ہو اس کی تلاش میں وہ شہروں کی طرف لیتے ہیں. ورنہ جس جگہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ایکچولی کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں, ان کے خوراک کا بھی کسی حد تک انتظام ہوتا ہے. کوئی فشر فوک ہیں تو ان کے لیے مچھلیاں ہوتی ہیں, جو لائف اسٹاک والے ہیں ان کا اپنا ریوڑ ہوتا ہے, اس سے آپ کے ڈیری پروڈکٹس بھی ان کو مل جاتی ہیں. جو گاؤں میں چیزیں اگ رہی ہوتی ہیں وہ فوڈر بھی ہوتا ہے اور انسان کے لیے فوڈ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو بہرحال کیش اکانومی کا وہ حصہ ہیں, دے ڈونٹ گیٹ دیٹ کیش جس سے آپ کی ہیلتھ کی ایکسیس ہو, آپ کے کپڑا وغیرہ چاہیے, آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دے کم ان ٹو دا سٹیز, but don't forget that I belong to a city جہاں پہ which is a magnet. پورے ملک کے لوگ وہاں آتے ہیں ایک بہتر زندگی کی تلاش میں, لیکن وہ کون سی زندگی ان کو وہاں ملتی ہے جہاں پہ 60% علاقہ اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں جن کو ہم کچی آبادیاں کہتے ہیں, جہاں آپ کے پاس صاف پانی نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو صاف ہوا نہیں میسر ہوتی, وہاں آپ کو کوئی اس طرح سے جو انسانی ضروریات ہیں, آپ کو صحت کے سہولیات, آپ کی پڑھائی کی سہولیات, یہ چیزیں وہاں میسر نہیں ہیں. اینڈ دس از اونلی وی آر ٹاکنگ آف کچی آبادی, سلمز اس کے علاوہ ہیں. سو ان کو وہاں پہ بھی وہ اچھی زندگی نہیں ملتی. اگین جس ادارے کے ساتھ میں والنٹیئر کرتی ہوں اس کا دوسرا ہمیں پروف جو مجھے یہ تھنکنگ ڈیولپ کرنے میں جو مجھے ایک وہ ثبوت ملا ہے, اور میں یہاں پہ اسی لیے وہ اینیکڈوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, کہ ایک گاؤں میں ہے سولر انرجی کی انٹرونشن تھی, وہاں مائکرو گریڈز دی گئی تھی, اور کچھ عرصے کے بعد ہم نے وہاں نئے گھر بنتے دیکھے. اور یہ پیٹرن نہیں ہوتا, لوگ گھروں سے مطلب گاؤں سے شہروں کی طرف جاتے ہیں, گاؤں میں ہمیں نئے گھر دیکھنے کو نہیں ملتے, لیکن وہاں وہ نئے گھر بنے تھے. تو جب پتا کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ گاؤں میں نئے گھر بنا رہے ہیں, تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو شہر میں کراچی میں 12 گھنٹے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, یہاں پہ سولر کی وجہ سے تو ہمارے لیے 24 گھنٹے لائٹ ہے, ہم واپس اپنے بیوی بچوں میں اپنے گھر میں کیوں نہ رہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ اف دیر از اکویٹیبل ڈیولپمنٹ, جہاں جو آپ نے جسٹس کی بات کی ہے, ڈیولپمنٹ جسٹس کو بھی ہمیں ڈسکورس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جو مائگریشن کا پیٹرن ہے یہ ریمپنٹ بھی ہوگا, ان مینیجڈ ہوگا. مجھے خوشی ہو رہی ہے اس میں دیکھ کے پارٹیسپینٹس میں مسٹر سرمد اقبال بھی ہیں, بشیر بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو اف سمیہ از دیر. ان کے ادارے نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے اکیڈیمیا کے ساتھ مل کے, جو سندھ کے کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر مائگریشن کے پیٹرنس یوں ہیں, اینڈ دے آر انگیجنگ ایٹ اے پالیسی لیول ود دا گورنمنٹ, کیونکہ جو کلائمیٹ چینج پالیسی پروونشل ہے, کم از کم اس کے اندر تو یہ چیزیں اکنالج بھی کی جائیں اور اس کے لیے اقدامات کو بھی سجیسٹ کیا جائے. سو تھینک یو سرمد اینڈ بشیر, دے آر فرام اسلامک ریلیف, اور ان کا اپنا پروجیکٹ ہے, آپ لوگ ان کے ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ کوشچن آنسر میں یہ لوگ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں. سو آئی ول اسٹاپ ہیئر, بٹ مائی پوائنٹ از کہ کلائمیٹ مائگریشن کو ہم ایک الارم بیل وہ ہمارے لیے اس کی حیثیت ہونی چاہیے, اور جب تک ہم ان فیکٹرز کو نہیں وہاں سے ریموو کریں گے تو یہ ٹوٹلی ان مینیجڈ ہوگی, اور اس سے جو سوشل اپہیول ہوگا اس کو ہم ابھی کنسیڈر بھی نہیں کر رہے. تھینک یو, آئی ول اسٹاپ ہیئر. تھینک یو مس آفیہ, دیٹ واز ویری انلائٹننگ. آپ نے بہت اچھا بتایا دیٹ کلائمیٹ مائگریشن جو ہے وہ لوگ جب ڈسپلیس ہوتے ہیں وہ صرف شہروں کا رخ نہیں کرتے, وہ کبھی کبھی ارد گرد کی ڈسٹرکٹس میں بھی جاتے ہیں. اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وین پیپل کم ٹو بگ سٹیز. اکثر ہم یہی سوچتے ہیں کہ کلائمیٹ مائگریشن رورل ٹو اربن ہے اور کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں میں لوگ جا رہے ہیں,
but log district wise seasonal migration bhi karte hain, annual migration bhi karte hain. So migration ke bhi ya nakl makani ke bhi bahut se different wo hain types hain. And if there is time, I will come back to Ms. Afia to discuss more about them. I am also very happy to know कि हमारे पास आपके कुछ दोस्त Islamic Relief से इधर हैं on this talk. And if there is any time, please आपने ज़रूर I will go back to you and आपने ज़रूर अपनी research के बारे में सबको बताना है at the end. Once I'm done with Dr. Imran Khalid साहब, I will come back to you hopefully जी. Dr. Imran Khalid Saab, thank you so much for joining us. And I know you were very busy today, so an extra thank you to you. Water is one of the big reasons why people end up leaving where they were born, where their grandparents lived, where generations of their family lived. Sindh mein ye main khud dekh ke aayi hu that apart from the absence of clean drinking water, या fresh drinking water, the fact कि saline water या sea water, because it's penetrated the ground, तो agricultural growth नहीं होती. लेकिन पाकिस्तान में water is such a political issue, शुरू से ही political issue है, और बहुत से सूबों हमारे आपस में ही झगड़ते रहते हैं, and Sindh in particular I think feels very neglected, as does Balochistan, over water woes. Please aap bataiye why water is such a political thing in Pakistan, why the Indus Delta, which is a crowning glory for our country, is not prioritized, and what we can do about it. जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का आज इससे. दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डिस्कशन और I guess I just want to start with this notion of dreams. कि what do you dream about? What do all of us dream about? हर एक बंदे के ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं. वो क्या है हमारी? ज़रा आप अगर एक सेकंड के लिए हम सोचें कि हम क्या चाहते हैं कि हम कहाँ पे हों आज से 5 साल बाद, इवन आज से 2 साल बाद, क्या हम जिंदगी में क्या चाहते हैं? अगर सिर्फ एक सेकंड लीजिए इसको सोचने के लिए कि आप क्या चाहते हैं. एंड देन लेट मी आई कम बैक टू जवाद साहब, हिज डॉक्यूमेंट्री, एंड देन योर क्वेश्चन. कल मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो इसके अंदर देयर इज अ यंग पर्सन, उसके ख्वाब हैं कि जी वो किसी तरह से जिस जगह पे रह रहा है उस जगह को छोड़ जाए. ही जस्ट वांट्स टू मूव आउट, और उसका गोल है कि जी वो वहाँ से निकले और कराची में जाकर फैक्ट्री में काम करे. नाउ पाकिस्तान में हम में से जिन लोगों का किसी फैक्ट्री से वास्ता पड़ा है या जानते हैं कि फैक्ट्रीज में क्या सिचुएशन होती है, तो वो किसी तरह भी किसी बंदे की ख्वाहिश नहीं हो सकती, कम से कम मेरे नहीं हो सकती. लेकिन दिस इज द सिचुएशन दैट दिस जेंटलमैन इज इन. एक यंग पर्सन है जिसकी होप्स एंड ड्रीम्स ये हैं कि मैं कराची जाऊं, फैक्ट्री में काम करूं, और दूसरी ये ड्रीम है कि उसके पास 70 सीसी मोटरसाइकिल है और शायद 125 सीसी उसको मोटरसाइकिल मिल जाए. These are the two dreams that he has. He is not talking about a family. He is not talking about his parents. He is not talking about his hometown. वो बस निकलना चाह रहा है यहाँ से, इस जगह से निकलना चाह रहा है. वो एक कस्बे में जाता है जहाँ पर उसको थोड़ी देर के लिए इस जगह से रिलीफ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों के पास सेल फोन है. वो हमारे लिए एक गाँव हो, लेकिन उसके लिए वो शहर की मुनासिबत रखता है. और ये वो चीज़ है जो कि जवाद साहब मुझे बहुत इस आपकी डॉक्यूमेंट्री ने अफेक्ट किया. आई वॉच्ड इट वंस, I'd like to go and watch it again and again. और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि सब लोग देखें और अपना टाइम लें. उसके अंदर गैप्स आते हैं, लोग बात कर रहे होते हैं, and then you just look at the expressions of the individuals who are there. और वो जो expressions हैं उनके चेहरों पर, वो आपको बताएंगे उनकी स्टोरी और उनके जो sacrifices कर रहे हैं. And it is all due to the fact कि हमारी जो गवर्नेंस है या हमारी डेवलपमेंट की ट्रेजेक्टरी है वो बहुत टॉप हैवी रही है. वो इन्फ्लुएंस रही है टेक्नोक्रेटिक मीन्स से, वो इन्फ्लुएंस रही है इंजीनियरिंग अप्रोचेस से. और अब मैं आता हूँ सारा के क्वेश्चन की तरफ कि ये जो पाकिस्तान में पानी के साथ हमारा रिलेशनशिप है एक बहुत ही सस्टेनेबल किस्म का हुआ करता था. डेल्टा के अंदर सस्टेनेबल हुआ करता था.
لیکن ایٹ دا ٹائم آف دا برٹش اگر اس کو وہاں سے شروع کریں, جب پنجاب میں کینال کالونیز بنی اور سوچا گیا کہ کسی طریقے سے یہاں پہ جو زمین ہے, جو بنجر زمین ہے, اس کو زیر آب لے کے آیا جائے, یہاں سے جو ایگریکلچر گرو کر سکتے ہیں, یہاں سے آپ را مٹیریل گرو کر سکتے ہیں, ان کو اٹھا کے آپ مانچسٹر میں فیکٹریز میں استعمال کر سکتے ہیں. سو اٹ واز دیٹ تھنکنگ جس کی وجہ سے کافی مائگریشن ہوئی پنجاب میں اس وقت بیکاز آف واٹر, اینڈ دین دیٹ لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف بیراجز, the building of canals that brought a certain amount of welfare and well-being to the people in these parts, but at the expense of those down south. اور یہ چیز آگے جا کے exacerbate ہوتی ہے جب ہم پارٹیشن ہوتی ہے, اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی آتی ہے, اس کے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو ہمارے 3 ایسٹرن ریورز ہیں they go to انڈیا, اینڈ دین ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو انڈس ریپلیسمنٹ ورکس کہتے ہیں. تو آج تربیلا کی بات ہو رہی ہے اپنے ہائیڈرو پاور سے, یا منگلا کی بات ہوتی ہے. تو these 2 dams are essentially built to replace the waters that had gone to India. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ان کو اریگیشن کے لیے استعمال کرنا. ہائیڈرو پاور تو وہ بعد میں ان کا آیا. تو جب آپ یہ چیزیں کر رہے تھے تو then you're only thinking about the power circles and where the influence lies. The influence lay essentially in the parts which benefited from these projects, not in the delta. Delta کے اندر کسی زمانے میں 150 ملین ایکڑ فیٹ پانی آتا تھا, جو پاکستان سے اب تک 140 کے قریب آ رہا ہے. So I mean all of it virtually found its way into the delta. It meant کہ وہاں پہ آپ کی فشریز بھی تھیں, آپ کے مینگروو فارسٹ, پاکستان کسی زمانے میں 6th largest ملک تھا مینگروو فارسٹ کے لحاظ سے, وہ سب ڈیگریڈ ہو گیا. آپ کا پانی آنا بالکل ایک طرح سے ریسٹرکٹ ہو گیا. 91 کے اندر ہم نے ایک واٹر پورشن ریکارڈ لے کے آئے اور ہم نے کہا کہ انوائرمنٹل فلوز آئیں گی, ہم لوگ پانی چھوڑیں گے ٹو دا ٹیون آف 10 ملین ایکڑ فیٹ ٹو دا ڈیلٹا. بٹ ایون دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی, اس سے بھی بہت کم پانی آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں واپڈا والوں سے تو وہ ہمیں ایوریجز بتاتے ہیں کہ دیکھیے جی اس ایوریج میں اتنا پانی آ رہا ہے, بٹ ایوریجز کی بات نہیں کر سکتے when it comes to water, because when floods come of course there will be more water, but what about the seasons when there is no water through floods? اور تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس لحاظ سے ہماری جو گورننس ہے فیل کر رہی ہے اس کمیونٹی کے لوگوں. I'll quickly wind up because I do want to hear what other colleagues have to say as well, اور جو آپ نے دوسروں کا ریفر کیا. 2-3 چیزیں جو انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھیں کہ یہاں پر فشریز جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں بیکاز آف some individuals who employ certain kinds of nets جو کہ جو فشریز ہیں اس کو سسٹینیبل نہیں بننے دیتے. Pollution is a major concern for the delta. So وہ ہم تھوڑا سا بدین ٹھٹا سے ہٹ جائیں اور کراچی کی طرف آئیں تو وہاں کا سارا انڈسٹریل میونسپل ویسٹ وہ بھی آپ کے ڈیلٹا میں آ رہا ہے, دیٹس آلسو کنٹامینیٹنگ اٹ. اینڈ فائنلی جو آفیہ اس پہ بات کر چکی ہیں, سی لیول رائز ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. سو ایک تو یہ تھا کہ جب آپ کا پانی اوپر سے آنا بند ہوا, آپ کی فلوز ڈیلٹا میں آنا بند ہوئی تو سی واٹر انٹروژن آٹومیٹکلی ہونے لگ گئی. Because وہ جگہ بن گئی, there's a vacuum created and the sea water is going to come in and it's going to make your drinking water supply saline. آپ کے پاس وہ میٹھا پانی نہیں رہے گا جس طرح کہ آپ کو سب میں بتائیں گے لوگ. دوسرا یہ کہ اب کلائمیٹ چینج کے ہم افیکٹس دیکھ رہے ہیں اور سی لیول رائز ہو رہے ہیں, that's exacerbating the situation. I'm not very hopeful about the future of the delta given our lack of empathy, lack of sympathy. ہم لوگ اپنے جو ڈیسیجن میکرز ہیں, جو ایلیٹس ہیں, جو یہاں پہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اس پہ بات کر رہے ہیں, we are to blame as well for this. It's just we'll talk about this and then I'll move on and do something else. So I'm not being directly affected by it. I'm not the right person. I wish we had somebody from the community. کھارو چند سے ان کو لے کے وہ بتائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. So I'm not very hopeful. I do hope کہ گورنمنٹ کچھ ایسے اسٹیپس لے جس کے بعد ہم
उनके जो फ्यूचर है उसको एड्रेस कर सकें, उनकी नीड्स को एड्रेस कर सकें. अगर वो माइग्रेट करना है उनको, तो उन्होंने कहीं पे ट्रांसफ़र होना है, तो जो उनकी जो जर्नी है उसको हम कंफर्टेबल बना सकें. Unfortunately, we are not having this discussion, and I think this is a good start. Jawad Sahab, again, thank you very much for doing this. Much appreciated. Thank you so much, Dr. Imran Khalid Saab. You've really summed it up well for us. और आपने शुरू में कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो साहब थे उनकी his dream is कि वो एक फैक्ट्री में काम करने जाएं जहाँ कि we know what the conditions are like, but the truth is कि the area surrounding the delta उधर इतने खराब हालात हैं on a daily basis कि एक फैक्ट्री में काम करना seems like a dream to this gentleman in the documentary, which जब आप सब देखेंगे तो you'll see कि कितना impactful वो scene है. दूसरा, डॉक्टर इमरान ने एक बहुत टेक्निकल और अच्छी बात की. a lot of times जब हम देखते हैं गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, देखते हैं फिगर्स, देखते हैं रिपोर्ट्स में कि इतना पानी रिलीज हो रहा है, इतना पानी सिंध को दे रहे हैं, इतना बलूचिस्तान को, ये एवरेजेस एज डॉक्टर इमरान सेड दे डोंट काउंट, बिकॉज फ्लडिंग आती है तो एवरेज सारी ऊपर नीचे हो जाती है पानी की. दैट सेड, I would love अगर मिस आफिया के जो दोस्त हैं, if they would just please unmute themselves, briefly introduce themselves, क्योंकि वक्त कम है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज, और हमें बताएं कि आपने जब काम किया on climate migration तो उसका what solutions do you think are best suited to deal with this problem? Thank you so much. I'm sorry, I just want to add Imran साहब की उसी conversation के अंदर उनकी जो बात है, if you allow me. जी जरूर. Thank you so much. First of all, Imran साहब, thank you so much for your for your kind observation. जिस तरह से आपने फिल्म को देखा और उसमें जो डिटेल्स थी उसको ऑब्जर्व किया, और हमारा एक्चुअली जो पर्पस था वो पर्पस भी ये था कि फिल्म को साइलेंट रखा जाए, ताकि वो जो एटमॉस्फेयर है, जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसकी फील को पोर्ट्रे किया जा सके. मतलब इट शुड टेक्स यू देयर कि वो क्या फील क्या है, और वो पेन क्या है, और वो माहौल क्या है. और उसमें हमारी कोशिश भी ये थी, इफ यू लुक एट द फिल्म सो इट इज़ वेरी स्लो. द शॉर्टर्स जो शॉर्ट है वो काफ़ी लंबे शॉर्ट्स हैं. इट टेक्स यू टू द पॉइंट कि आपकी पेशेंस का इम्तिहान आ जाता है उसके अंदर. सो दिस वाज द कॉन्शियस डिसीजन कि ताकि वो जो फील है उसको हम जो है वो महसूस कर सकें. एंड अदर देन कि अब जहाँ तक बात है सब्जेक्ट्स की, कि जिस तरह जो अयूब उनके वालिद हैं और फिर उनका बेटा अयाज है. सो अयाज का जो पूरा जो करैक्टर था उसको ऐड करने का जो पर्पस था, वो पर्पस भी ये था कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसके अंदर वो सामने दिख सके. अब वो बच्चा जो है वो उस जगह वो कश्ती पे काम नहीं करना चाहता, उसके ख्वाब बिल्कुल शहर जैसे हैं. एक फिल्म के अंदर सीक्वेंस है जिसमें वो अब जो सबसे करीब उन्हें जो शहर मिलता है, जो उनके लिए जो शहर है वो बगान है. ठीक है, अब वो बगान जाते हैं वो लोग, विच इज एक्चुअली वो 2 घंटे का फासला है. तो अब वो बगान के अंदर जाके उसकी जो एंटरटेनमेंट है वो अपने बाकी जो उसके जो दोस्त हैं उनके साथ बैठ के वो टिकटॉक वीडियोस देख रहा है. सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि वो बच्चा जो है वो किस माइंड सेट में लिव कर रहा है, उसके क्या ख्वाब हैं, वो किस तरह उनको लेके चलना चाह रहा है. और फिर के ऑन अदर एंड वो लुकिंग एट अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको वो उसकी जो है ना मिजरी फील होती है. इवन आप अगर अयूब को देखते हैं तो वो जब अपने दोस्तों को विजिट करने जाता है इब्राहिम हैदरी के अंदर, सो इवेंचुअली के ही ब्रोक डाउन. मतलब वो कहता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, और मेरे पास कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. और वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है कि वो अपना इलाका, अपनी धरती, अपनी मिट्टी को छोड़ना भी नहीं चाहता, और फिर वो सारी जो मजबूरियां हैं वो उसको वहां तक लेके जा रही हैं. एंड ही स्टिल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. अगर आप फिल्म की क्लोजिंग देखें तो उसका जो अयूब जो है उसके पोर्ट्रेट के ऊपर बिल्कुल जो है वो साइलेंट, उस पर वो क्लोज करने का पर्पस ही ये है कि ही स्टिल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट
کہ مطلب he doesn't know کہ what to do, and this is very, I mean کہ this thing frustrates him every passing day. ان کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو those were like I am glad like آپ نے ان کو observe کیا, and those were very conscious جو ہے وہ technical decisions تھی. لیٹ می سی, آئی تھنک کہ ہارون اویلیبل نہیں ہے, میں ان کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ہی از دی رائٹر آف دی فلم اینڈ ہی از دی ڈائریکٹر ایز ویل. سارا اگر وہ ہوتے ہیں نا آن لائن, سو آئی ول ٹیک ہم آن اے کال. ہی از ٹریولنگ ٹو گلگت. چلیں ٹھیک ہے. جی جی جی, میرا نام ہے نسرین اقبال اور میں عافیہ ایجوکیشن میں ہوں, اور میری عافیہ سے پہلے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی, اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگ گلگت بلتستان میں گئے ہوئے تھے. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتاؤں, میرا اسکول ہے سو مڈل اینڈ لو مڈل کلاس اسٹوڈنٹس, مگر ہم بہت ہولسٹک ایجوکیشن دیتے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر بھی. اب چند سال پہلے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سارا اٹ واز اے پریزنٹیشن, جو آپ ٹیبلو کہہ لیں, کچھ ایک کہانی تھی نیم کا درخت, اس کے اوپر بنائی تھی. وہ جو کچھ ابھی بیان کیے جا رہے تھے وہی کچھ اس میں تھا, اور میں آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو آل اس کی, کیونکہ اس کا ایک ویڈیو بھی بنا ہوا ہے کلپ. یہ گاؤں میں لڑکا ہوتا ہے تو یہ تنگ آ جاتا ہے, اس کا دوست آتا ہے باہر سے سوٹ شوٹ پہنے ہوئے, تو اس نے کہا میں نے بھی چلے جانا ہے, ہمارے کیسے گھر ہیں اور یہ وہ. اچھا, چلا جاتا ہے وہاں سے, ماں بیوی کافی روکتے رہتے ہیں. خیر وہاں پہ جاتا ہے, اور ایک اچھی بات ہوتی ہے کسی سے پریشان ہوتا ہے, اور جیسے عافیہ جیسے کوئی ہیں لوگ, ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بہت ناخوش رہتا ہے. تو اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے تو میرے نیم کے درخت کے نیچے میں سوتا تھا ویسی نیند مجھے نہیں آتی. جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ بھی اس سے کہتی ہے کہ تم واپس جاؤ اور وہاں پہ اپنی, اگر تمہارے پاس بھینسیں ہیں اس کے اوپر کچھ کام کرو, دودھ, اور ہم لوگ تمہیں ساتھ نو ہاؤ دیں گے کہ اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے. اور اسی طرح جو اور ان کے درخت وغیرہ تھے کہ کچھ اور درخت وغیرہ لگا لو. اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک پنجابی کا گیت تھرو آؤٹ بچے گاتے رہے تھے کہ تینو مٹی پہ ہی بلاوے, تینو ماں پہ ہی بلاوے. اچھا, یہ جب واپس جاتا ہے تو پہلی دفعہ اس کو نیم کے درخت کے نیچے نیند آتی ہے, اور بیوی بھی اس کی بڑی ہوشیار ہوتی ہے. پھر یہ 2-3 چیزیں بنانے لگ پڑتے ہیں. یہ ہے تو کہانی, مگر it can really be done in practical life. وہیں پہ وہ ریٹھوں کی پھر شیمپو بنانے لگ پڑتے ہیں. 2-3 چیزیں جو بنا لیتے ہیں, ایک تو دودھ جو بڑے ہوتے ہیں گروپس ان کو بیچنے لگ پڑتے ہیں, ان کی گاڑی, اور یہیں پہ خوشحالی آ جاتی ہے. اور جب یہیں پہ خوشحالی آتی ہے تو اور ساری کمیونٹی جو ہوتی ہے اٹ گروز اینڈ دے آر ایبل ٹو اٹریکٹ ادر ہیلتھ سینٹرز اور کچھ اسکول والے. اور یہ تو اس طرح کی کہانی جو ہے, اور کیونکہ ہمیں یہ سب آگاہی اسکول میں بچوں کو دینی ہے تاکہ ان کو تب پتہ چلے کہ یہ نہیں کہ وہاں پہ اگر ٹیکنالوجی زیادہ ہے, اب تو خیر گاؤں گاؤں میں پہنچ گئی, یہ سب کچھ ہی ہو گیا ہے. میں تو پرانی بات کر رہی ہوں, آج سے 10-12 سال پرانی بات کر رہی ہوں, جب عام لوگوں کے پاس یہ سیل فونز بھی نہیں تھے. مگر اس کے بینیفٹس, اور ابھی جو سولر انرجی آ گئی اس کی وجہ سے اور بہت فائدے ہیں. اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں ڈیولپمنٹس اینڈ لٹریسی ایک این جی او ہے جو بہت بڑا کام دل اسکولس کا کر رہی ہے, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اسکول جو ہیں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ہیں, اور سولر پینلز کے تھرو وہ جو ادھر ہیڈز ہیں ٹیچرز, وہ سب نئے جو طریقہ کار ہیں یا جو ماڈیولز جاتے ہیں وہ سیکھ کے تو آگے سکھا رہی ہیں. تو وی ڈو ہیو اے فیوچر پرووائڈیڈ وی گو اباؤٹ اٹ. اگر ہم ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کریں تو زندگیاں جو ہیں کچھ نہ کچھ بدل جائیں گی, اور یہ مائگریشن جو ہے کچھ نہ کچھ رک جائے گی. تھینک یو. Thank you so much ji, this was so nice. And آپ بالکل آپ نے صحیح کہا that we need more effort and concerted effort from all fronts. Miss Afia, would you like to comment, or would you like to invite your friends from Islamic Relief? We are running out of time, but اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور please. So I can see Mr. Sarmat Iqbal here. Would you like to say something? I saw Basir as well, but Sarmat? Yes, please unmute yourself, introduce yourself and your organization and the work you've done in film.
Thank you very much, Afia. एक तो जो है ना, it is always good to hear you and other distinguished speakers talk about this very important subject of climate migration. My name is Sarmad Iqbal, and I am basically a law student as well as the manager strategic partnerships and business development for Islamic Relief, and I've been leading on the environmental side of the legal front as well as from the social front. So this climate-induced migration, the governance perspective is one of the researches that we are doing, and we're right now concluding those researches with regards to how they could be presentable and how they could be presented in all the 3 provinces and then taken up at the national as well as at the COP. Our research is basically very wide, and in a nutshell, what we see is that the point that Afia made, that migrants or the climate migrants would not move into urban centers, but also to the adjacent districts. But is our government or is our governance system really prepared to intake those? Is the services, facilities ready to bear this burden? Is the government ready to actually put funds for the development of those areas? These are some of the key critical things that have come out of that research, and please stay tuned. We'll soon be hosting events, in-person events in Islamabad, Peshawar, Lahore, Karachi, and Quetta. We'll definitely be getting in touch with you. The last thing that I wanted to say here was that this research idea or this thing stemmed out from our initiative of responding to the crisis in 2019, when the displaced people from the Malakand region moved into the host communities in Mardan and other areas, and within no time, the concept of harmony, peace got shattered, because there was fighting and quarrels over water, over land use, over occupancy, and this is the kind of thing that we might foresee when it comes to the induced disasters of climate and leading to. In a nutshell, this was our research, but we'll be happy to further discuss these things at a later stage. Thank you. Thank you so much, Sarmad Saab. We're very glad you were able to join us, and we're very glad to have heard from you. सब बाकी panelists का भी बहुत शुक्रिया. I know Miss Afia and Rafi Saab's left. Miss Afia has another call to take. I want to thank the panelists again. Dr. Imran, thank you so much. Miss Afia, बहुत शुक्रिया. Rafi also. And I want to thank the whole audience, everybody in the audience who joined us, who heard us. अगर आपके कोई सवाल हैं तो please Facebook पे जब ये live share होगी तो उसके नीचे लिखते हैं. I'm sure our panelists would love to answer it. Jawad, I hope that this documentary will get seen. Thank you so much for making it. And please do continue working on other important social issues. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you so much, Sara. I just want to add, I mean कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म कहाँ पे अवेलेबल है या उसको कहाँ पे देखा जा सकता है. So it is available online on YouTube. नतारी के टाइटल से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी. मैंने चैट के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दिया है, और आप इसको हमारी वेबसाइट क्लाइमेट कहानी ClimateKahani.com पे भी जाके इसको देख सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर कोई भी सवाल हो या किसी भी हवाले से जो है कोई डिस्कस करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम. और उसके साथ वी आर ओपन फॉर कोलैबोरेशंस इन सेंस ऑफ के कोई स्क्रीनिंग इवेंट करवाना है, कोई डिस्कशन करनी है, और इस टॉपिक को लेके जाके हमारी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा आउटरीच हो सकती है उसको जो है वो किया जाए. आई मीन के इवन इन द यूनिवर्सिटीज, इन द स्कूल्स और एनीवेयर जहाँ पे भी जो है वो पॉसिबल हो सकता है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर such an important discussion. Thank you so much. Thank you, Jawad. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.
जॾहिं वहिकरा हूंदा हुआ त असांजो हीउ सॼो इलाइक़ो सरसब्ज़ हूंदो हो ऐं उन खां पोइ ॿियो वंगा थींदा हुआ। हीउ इलाइक़ो ख़ुशहाल हो। जेका ज़िंदगी गुज़ारियां पियो आहियां उन मां बेज़ार आहियां, इहा सिधी सही ॻाल्हि आहे। हितां खां निकिरण जो ख़्यालु त मूंखे हर रोज़ु ईंदो आहे। हिते कुझु आहे बि कोन, हिते हाणे कुझु बि न आहे जेको वेहण जे लाइ, कुझु ई न आहे। ही दरियाए सिंध आहे, जेके सिंधू दरिया चवंदा आहियूं, उहो ई आहे जंहिंमें पाणी न आहे ऐं हाणे मच्छी जो को गुज़र सफ़र हिन में कोन पियो थी सघे। असां ॾाढो हिते उहा ज़िंदगी पिया गुज़ारियूं जेका जानवर गुज़ारनि था।